Hello friends, welcome to ProTalent and this is our CLAT 2017 verbal ability discussion. So we are discussing about CLAT 2017 paper. Here we are going to discuss in detail about this entire section. English section turns out to be very important because in English section out of 40 questions one can score 35 plus. That is possible. आप 35 plus आसानी से लेके आ सकते हैं. And more importantly, that doesn't require you to put a lot of efforts. Let me tell you the breakup of English section in this particular exam. So fill in the blank, जो 10 questions की थी, ये fill in the blank was not majorly from a vocab angle, but it was from an angle of preposition or usage of specific word. तो ये fill in the blank उस perspective से थी. Reading comprehension 5 questions थे. Now उस पर्पस के लिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन काफी बड़ा था. रिमेंबर इन दिस पर्टिकुलर वीडियो आई एम नॉट सॉल्विंग दिस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के 5 क्वेश्चंस, आई एम सॉल्विंग रेस्ट ऑफ दी 35 क्वेश्चंस. काफी बड़ा पैराग्राफ था और मुझे लगता है कि एग्जाम में यू कुड हैव लेफ्ट इट. दैट्स रियली पॉसिबल. ग्रामर सेंटेंस करेक्शन के 5 क्वेश्चंस हैं एंड आइडेंटिफाइंग इनकरेक्ट पार्ट ऑफ ग्रामर उसके 10 क्वेश्चंस. सो टोटल ग्रामर मिला के 15 क्वेश्चन का पार्ट था और ग्रामर में जो भी क्वेश्चंस आए थे दे वर ऑफ रीजनेबली एडवांस लेवल लाइक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, मॉडिफायर्स, पैरेललिज्म, कंपैरिजन. आई एम गोइंग टू डिस्कस ऑल दिस इन डिटेल व्हेन आई एम सॉल्विंग दोस. एंड देन करेक्ट स्पेलिंग के 10 क्वेश्चंस. ठीक है. नाउ करेक्ट स्पेलिंग इज टर्निंग आउट टू बी रीजनेबली इजी. आई एम श्योर someone who is reasonably good with English would be in a position to attempt around, you can say 8 to 9 questions out of it, and that could be very manageable. So with this understanding, let me start to talk about the actual questions. So we start with question number 1. Kanak is endowed blank many great qualities. So Kanak is endowed in, endowed by, endowed with. ठीक है. So obviously the answer would be, I'm sure every one of you understand, it is endowed with. So endowed with का generally nature कैसा होता है? Let us understand this. ठीक है. Endow someone with something, that means to bestow or give a monetary donation on someone or something. For example, a wealthy benefactor has endowed the college with. ठीक है. That means to give something to someone. Rachel's absence this year really endowed the event with. So endow हमेशा with के साथ काम करता है. So that is what you should be knowing. Moving further, if they want to succeed, they blank have to work very hard. ठीक है. अब if they want to succeed, they ought brings a kind of duty. Now this is not duty, this is condition. Okay, this is condition. If they want to succeed, they will have to work hard. चल सकता था. ठीक है. They must have to work hard, ये नहीं चलेगा. They must work hard चल जाता, but they must have to work hard. That is not done. Have to. ठीक है. They will have to has a meaning equal to must. ठीक है. और should भी नहीं चलेगा. सो ऑब्वियस आंसर आपके लिए होगा will. सो आप ये समझिए यहाँ पे must क्यों नहीं चलेगा, बिकॉज यहाँ पे have आ चुका है. should और have नहीं चलता यहाँ पे. सो देयरफॉर will have is a better answer. should एक तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाता, वो भी आंसर नहीं होता. क्वेश्चन नंबर 3. सुनीता decided to set blank sometime every day for prayer. So what do? You decide to set aside some time every day for your CLAT preparation. You set aside some time for vocab development. You set aside some time for GK. So that is called setting aside. Okay. So the answer to that is set aside. Let us understand
ये फ्रेजल वर्ब्स और कौन कौन से होते हैं सेट के साथ? एक होता है सेट इन. सेट इन का मतलब होता है टू बी फिक्स्ड एंड अनेबल टू चेंज. ही इज set in his way, he will not change. Or to place something so that it is surrounded by a medium. Can you set that statue in the cement? Okay. दूसरा है set on. Set on का मतलब होता है to have expectations that something will happen. So my daughter was set on going to the beach. Or to place something on a specific location. Can you set that flower pot on that steps set up to put together? After opening all the presents during the Christmas, they set up the train set. Okay, set out, that is to have a goal, and set off is basically to start a journey with a goal in a mind. So ये है अलग अलग तरीके के set के साथ phrasal verbs. इसको आप एक बार रेफर करिएगा, वापस देखिएगा, and I'm sure that will be very useful to you. Coming to question number 4, the passengers, they were very happy with, or they were very happy about the friendly and warm treatment. So they were very happy about. So they were very happy about. Okay. So answer would be about. तो उनको खुशी थी इसके बारे में. That is how the question would be. Number 5, the minister flew the flooded areas in the helicopter. So what are the important things related to this fly? So the root word here is fly. Okay. So what is fly about? Fly about का मतलब होता है past very quickly. कोई चीज से फटाफट निकल जाना. That is called pass very quickly. Fly over. Okay. Fly over मतलब physically किसी के ऊपर उड़ना. Fly along, that is moving along. Okay. Fly along, moving along. Fly in, that is coming in. Okay. So obvious answer would be fly over. I think this was very easy for large number of students. So let me show you few more things related to this fly. Fly around होता है and fly at होता है. Fly around, which means that is you can say if ideas, remarks, accusations are flying about or fly around, that means they are passed very quickly. अभी मैंने बात करी थी, ठीक है. And then fly at, that is to attack at. Okay. Moving further. So question number 6, it says we shall fail blank, we are industrious. So अगर हम industrious नहीं होंगे तो हम fail हो जाएंगे, ठीक है. So basically unless we are industrious, we are going to fail it. So how do you use unless? Unless means if not. Okay. Unless means if not. Like if, unless is followed by a present tense or past tense or past perfect tense, but it is not conditional. Unless is used instead of if not in a conditional sentence. अगर if not का condition है तो वहां पे if not की जगह पे unless use कर सकते हैं. Order of the clause doesn't matter, but what is of importance is that if not आएगा तो उसकी जगह पे आप unless use करने के काबिल होने चाहिए. Coming to next question. Question number 7 says that would anybody blank a mother have risked her life for the baby? So would anybody other than a mother have risked their life? That's the meaning to this question. Yes or no? I'm sure ये आपको समझ में आ रहा है. So would anybody other than के लिए क्या वर्ड बन सकता था? But. ठीक है. Rather a mother. Rather नहीं चलता यहाँ पे. Then नहीं चलता. However नहीं चलता. एकमात्र आंसर but. ठीक है. So I'm sure that's an easy one. Question number 8. You have played a great role, comma, for blank, your help, I possibly would have landed myself in a problem. So that means for, you can say, this kind of your help, I possibly would have landed in the trouble. आपकी मदद के बगैर मुझे क्या हो जाता? Trouble. So that is without your help, it would be a trouble. That's how the question would be. Question number 9. The doctor advised him to go blank several medical tests. So the doctor advised him to go. To go through हो सकता है. Yes, go through is
to follow this medical test. Go under का मतलब होता है bankrupt हो जाना, ठीक है, या emotionally खत्म हो जाना. That's called, you can say, go under. Go into का मतलब होता है inquire करना. That is also not right. And go about is to begin something. Yes or no? So obviously this is not the right answer. Answer would be 3. That is the option number A. That is go through. Okay. Let's look at this few more. Go off. Go off is to make a loud noise or explode. To go over, that is to review. To go on, that is to happen. ठीक है. Go with, that is to match. ठीक है. Go out, that is to stop working. Or go along with, to agree. To go by, that is to pass. And so many such kind of, you can say, phrasal verbs will be available. Your work is to try and get those understanding. Moving further, question number 10. She stood blank Amit. So she stood, you can say, with Amit or blank Amit, but could not utter a single word for quite some time. So she stood before Amit. ठीक है, अमित के सामने खड़ी रही और फिर भी एक भी शब्द नहीं बोल पाई. ठीक है. इफ शी स्टूड फॉर अमित, अमित के लिए खड़ी हुई होती तो उसको मदद करती वो, ऐसा कुछ सेंटेंस आता तो वो तो आंसर नहीं है. सो आंसर क्या हो जाएगा? सी. ओके. सो दिस आर द 10 क्वेश्चंस which are fill in the blank type. Okay. Now there are 5 questions on reading comprehension. ठीक है. Now I'm not going to solve this 5 questions for reading comprehension for the simple purpose कि ये जो RC है वो काफी बड़ा था. It would be reasonably difficult for me that in this format I can, you can say, discuss with you. So keep this in mind that in this video I have not covered those 5 questions. Though I'll be showing you those 5 questions. So this is WTO related paragraph, reasonably big paragraph. ठीक है. मेरी ही स्लाइड में करीबन 4 बार हो रहा है. ठीक है, 4 स्लाइड में ये पहुंचा है और उसके बाद 5 क्वेश्चंस है. आई थिंक दे आर मैनेजेबल. आई एम श्योर यू विल बी इन अ पोजीशन टू गो फॉर इट. ओके, चलिए, ग्रेट. सो लेट मी मूव फर्दर. एंड नाउ देयर आर मेनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू ग्रामर. ठीक है. सो लेट मी एक्सप्लेन यू कि ग्रामर में कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसके ऊपर अगर आप मेहनत करेंगे so there is short benefit you are going to get. Okay, what is that benefit? First, subject verb agreement. Whenever you read a sentence, look at subject verb agreement, which means अगर subject singular है तो आपका verb भी singular आएगा, subject plural है तो verb plural आएगा. That is very important. Identify that. आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स वो फटाफट देखते नहीं है और इसके कारण से गलतियां होती है. प्लीज ऐसा न करें. प्रोनाउन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. अगर सिंगुलर सब्जेक्ट यूज होगा तो उसका प्रोनाउन भी क्या होगा? सिंगुलर. प्लूरल होगा तो प्लूरल आएगा. देन यू हैव अ कंसेप्ट कॉल्ड मॉडिफायर. मॉडिफायर के लिए रूल बहुत सिंपल सा है. मॉडिफायर आर द ग्रुप ऑफ वर्ड्स, दैट मीन्स दे आर फ्रेजेस. दे मॉडिफाई अ गिवन, यू कैन से, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट और एनीथिंग इट मॉडिफाइज, उसके बिल्कुल नजदीक आना चाहिए. वो बहुत दूर नहीं चलेगा, ये ध्यान रखिएगा. ठीक है. कंपैरिजन, सही चीज का कंपैरिजन होना चाहिए. ठीक है. सो यू विल कंपेयर क्वांटिटी ऑफ एप्पल्स विथ क्वांटिटी ऑफ ऑरेंजेस. यू विल नॉट डू क्वांटिटी ऑफ एप्पल विथ ऑरेंजेस. गलत है. क्वांटिटी विल बी कंपेयर्ड विथ क्वांटिटी. एप्पल्स विल बी कंपेयर्ड विथ ऑरेंजेस. ओके, चलिए, ग्रेट. एंड देन पैरेललिज्म. ठीक है. पैरेललिज्म क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आई एम गोइंग टू टेक वैकेशन टू एंजॉय विथ फैमिली, टू रीड अ बुक एंड टू विजिट न्यू प्लेस. सो दैट इज टू रीड अ बुक, टू एंजॉय एंड टू विजिट. सो दैट इज टू ऑल विल बी कमिंग एज सेम. ठीक है. अ राइटर, अ प्रोड्यूसर एंड एन एक्टर आर कमिंग टू माई हाउस. ऐसा बोल सकते हैं. ऐसा नहीं चलेगा. अ राइटर, कॉमा, द गाय हु गिव्स मनी and the person who acts, नहीं चलेगा. So या तो you say that the guy who writes, the guy who gives money and the guy who acts, ऐसा चल सकता है. That is called parallelism. वापस समझते हैं. subject verb agreement, that is जो भी आपका subject है, if it is singular then your verb would be singular. Okay,
and if it is plural then it is plural. अब ये देखना पड़ेगा. अब जैसे कलेक्टिव नाउन है फॉर एग्जांपल, है ना, कमिटी, टीम, तो ये सब जनरली कैसे यूज होगा? एज अ सिंगुलर. ठीक है. अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम हो गया, उसमें कोई डिस्प्यूट, फॉर एग्जांपल द ज्यूरी हैज कम टू अ डिसीजन, द ज्यूरी हैज कम टू अ डिसीजन, the jury members are at odds with each other, so that is how they have a problem, ऐसा बोल सकते हैं. So that is called subject verb agreement. Let us apply all this information in the given questions. ठीक है. This is the first question. The question is, two valence states of uranium, one with a deficit of 4 electrons, and अब जो गलत बात है वो यहां पे देके रखिए अंडरलाइन करके. ठीक है. The other one with a deficit of 6 occurs in nature and contributes to the diversity. ठीक है. So point is, सबसे पहला point हमने देखा subject verb agreement. Okay. So two valence states of uranium. So this two valence states of uranium is basically a singular subject. याद रखिएगा, two valence states. ठीक है. That is a singular one and therefore occurs और contributes, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, they are right. Okay. What may be possibly wrong could be the other one with, ठीक है, क्या लिखा है? One with deficit of 4 electron and other with a deficit of 6. So other one बोलने की आवश्यकता नहीं है and therefore आंसर क्या बनना चाहिए? B. Look at this. The other with a deficit of 6 occur and contribute. So यहाँ पे two valence states will be treated as a plural, जो गलत है. ठीक है. यहाँ पे भी सेम है और 1 with 6 occurs in nature and contributes. So क्या बोला? 1 with a deficit and the 1 with, अब the other होना चाहिए, इसलिए ये आंसर नहीं होगा. आंसर हो जाएगा आपका B. Okay. Coming to question number 17. Many of them chiseled from solid rock centuries ago, the mountainous regions are dotted with hundreds of monasteries. Okay. अब यहाँ पे क्या है भाई? mountain regions are dotted with hundreds of monasteries and these monasteries, many of them are chiseled from solid rock. Okay. So that means ये monasteries को refer करता है ये them. So it should come very near to that. It should come very near to that. Okay. So होना क्या चाहिए? These mountainous regions are dotted with hundreds of monasteries and many of them is monasteries को refer करता है. ठीक है. So this is basically called modifier और अभी हमने बोला modifier उसी के नजदीक आना चाहिए जिस चीज को वो modify करता है. So आंसर क्या बन जाएगा आपका? C. Coming to question number 18. During her lecture, speaker tried to clarify directional terms for not everyone in attendance was knowledgeable that winds are designed by blah blah blah. So for not everyone, ये बिल्कुल सही है यहां तक तो. In attendance was knowledgeable. ठीक है. अब पॉइंट ये है कि बात हो रही है not for everyone, सब्जेक्ट ये है. So that means ये पैसिव वॉइस में that is was knowledgeable, वहां जाने की जरूरत नहीं है, सीधा बोलना जरूरी है. for not everyone attending knew, जितने भी लोग वहां अटेंड कर रहे थे उनको नहीं पता था, they knew. So that means for not everyone attending knew should be the answer. Okay. Moving further, question number 19. Initiative and referendum is a procedure. अब जब उन्होंने खुद ही इस पूरी चीज को सिंगुलर मान दिया है, कैसे मान लिया है? उसको is बोल दिया है. ठीक है. So is a procedure that allows, so that is okay, that allows voter to propose and pass laws as well as to repeal. Remember, parallelism, to propose and to repeal बिल्कुल चलेगा, allows बिल्कुल चलेगा क्योंकि वो आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है. And therefore your answer should be one which is ditto the given as it is. Okay. Moving further, question number 20. Plausible though it sounds, the weakness of the hypothesis. Okay.
प्लॉजिबल दो इट साउंड्स, प्लॉजिबल क्या साउंड करेगा? हाइपोथेसिस. सो दिस एंटायर पार्ट इज अ मॉडिफायर. मॉडिफायर के बाद इमीडिएटली क्या आना चाहिए? हाइपोथेसिस. सो हाइपोथेसिस उसके बाद इमीडिएट यहां पे आना चाहिए. नहीं तो ये ऐसा बोलता कि वीकनेस इज प्लॉजिबल, जो नहीं चलेगा. सो क्या होगा कि भाई दो द हाइपोथेसिस साउंड्स प्लॉजिबल, ऐसा बोल सकते थे. दो हाइपोथेसिस साउंड्स प्लॉजिबल, its weakness, that could be a better one. So therefore answer should be first. Okay, so I hope this is comfortable. Let me move further and talk about question number 21. Now they are the, we can say, spelling related word. Spelling है, ठीक है, gallows करके है. So gallows is definitely GALLOWS. Gallows is basically the answer here. ठीक है, I'll be going very fast here because I'm sure that is either you know it, and if you don't know it, then you should know answer. Remember that. Coming to, you can say question number 22, blasphemy. Blasphemy का मतलब होता है किसी को धर्म के लिए, you can say, खराब बोलना. It is blasphemy, not blush. SH खत्म है, ठीक है, और PHEMI है. So therefore answer would be C. That's called blasphemy. Question number 23, accommodation. Now this is very interesting. बिल्कुल याद रखिएगा, ACCO ठीक है, ये याद रखिएगा. दिस इज द आंसर, accommodation. मूविंग फर्दर, क्वेश्चन नंबर 24, ठीक है, remuneration. Remuneration is referring to this remuneration and therefore D is the answer. Question number 25, ठीक है, it says gratuitous. Gratuity के ऊपर से वर्ड आया, so that is called gratuitous and therefore B is the answer. Okay, ठीक है. 26, choose the correct alternative. Annulment. Annulment is to cancel. Okay, annulment is to cancel. C is the answer. Okay, annulment is to make something zero. That is called annulment. Interrogation. Interrogate करना is to question someone, so that is called interrogation. Double R है, interrogation. ठीक है, so that means answer is A. ठीक है. Question number 28, hypothecation. हाइपोथिकेशन का मतलब होता है कि अगर किसी ने कोई एसेट के लिए लोन लेके रखी है, सो उसका हाइपोथिकेशन किया गया है. सो दैट इज कॉल्ड हाइपोथिकेशन. हाइपोथिकेशन इज बी. ओके, एंड नंबर 29 refers to, so moratorium means a temporary peace. That is what the meaning of this moratorium. And then question number 30, which is abeyance. Abeyance is a temporary stop, suspension. So that is the right answer. Okay, chaliye, moving further, we go to few other grammar related questions. These are the 10 once again grammar related questions. मेरा ऐसा मानना है कि जो मैंने आपको 5 पॉइंट बताए थे, अगर आप उन 5 पॉइंट पे मेहनत करेंगे, सो आई एम श्योर आपके 99% क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे. ओके, चलिए आगे देखते हैं. एविडेंटली आवर प्रोडक्ट इज द मोस्ट यूनिक इन द मार्केट. यूनिक बोला, द मोस्ट बोला, तो वो सही नहीं है. इधर यू से आवर प्रोडक्ट इज यूनिक इन द मार्केट, सो एनीवे दैट्स अ ओनली प्रोडक्ट, है ना, और इट इज द मोस्ट, तो यूनिक वर्ड नहीं आएगा. ठीक है, सो देयरफॉर आंसर शुड बी बी. ठीक है, सो आप दो बार एक का एक मीनिंग यूज नहीं कर सकते हैं. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 32, आफ्टर बीइंग फिनिश्ड द लास्ट चैप्टर ऑफ द बुक, रिटर्न इट टू मी. सो यू आर टेलिंग टू समवन that after you finish the last chapter. So after being finished तो नहीं होगा. ठीक है, तो आंसर क्या होना चाहिए? A. ठीक है, ये गलतियां नहीं होनी चाहिए, ये ऑर्डर में नहीं होता है. हाँ, ये ध्यान रखिएगा, ये जो देखे रखा है दैट इज नॉट इन ऑर्डर. ठीक है, ये सब चीज ऑर्डर में नहीं है. ठीक है, तो आपको देखना पड़ेगा यहाँ पे A है और आपका ऑप्शन हो जाएगा B. तो आपको एग्जाम में B टिक करना होगा. क्वेश्चन नंबर 33, ऑन लिस्टिंग टू द कन्फेशन ऑफ लव शी ब्लश्ड until she was purple. Now I have a big doubt कि यहाँ पे she was purple की तरीके से यूज होगा कि नहीं होगा. दो CLAT mention answer is D. I have a little doubt in terms of meaning of this. ठीक है, चलिए moving further. Question number 34, 5 gallons of petrol. Remember, 5 gallons of petrol will be treated as a singular subject. It is not a plural and therefore R use नहीं होगा. And therefore answer क्या होगा? B. Okay, 5 gallons of petrol is not enough. Okay, चलिए moving further. 35, the officer
ask that the report is to be submitted immediately. Report में यहाँ पे कोई verb दिख नहीं रहा है आपको. There is no verb visible. So when there is no verb visible, that is definitely a wrong answer. So that means C is the answer. Question number 36. He gave me a ticket so that he gave me, past tense है. Okay? So यहाँ पे past आ जाना चाहिए. I may तो नहीं चलेगा. ठीक है. And therefore answer क्या हो जाएगा? C. क्योंकि यहाँ पे past tense है. ठीक है. And therefore यहाँ पे भी past tense आना जरूरी है. Question number 37. The hope to go through the book today. I have almost read half of it. The hope to go through. ठीक है. So ये सही से बैठा नहीं है. ठीक है. The hope to go through the book है ना. Hoping to go through the book है ना. तो ये चलेगा. The hope से नहीं काम चलेगा. आंसर हो जाएगा आपका, you can say A. That is the option number B. And question number 38. Since I have forgotten all, you can say, equations, I will have to start from scratch. The बोलने की जरूरत नहीं है. I have to start from scratch. So therefore answer होगा D. Question number 39. That says the most difficult job is to bend, then to lift the weight. To bend, to lift, comparison. ध्यान रखना, सेम चीजों का कंपैरिजन होता है. So you say in a comparison to bend, तो उसके साथ आएगा to lift. Okay, that is how it should become. So therefore answer क्या होना चाहिए? C. And then we have a last question. ठीक है. Our boss always asks us to pay full attention to the work at hand. That is, give full attention to the task. Work at hand का मतलब है कि मतलब this is task. ठीक है. So होना क्या चाहिए? Give full attention to the work. इतना sufficient है. ठीक है. Not work at hand. तो ये D जरूरत नहीं है. So therefore answer would be D. Okay. So with this we close this particular module. But I understand that for all of you English turns out to be important area. Focus कौन कौन से एरिया पे करना है आपको. ग्रामर इज मस्ट. बगैर ग्रामर काम करने में मजा नहीं है. ग्रामर हर तरीके का आना चाहिए. ठीक है. ज्यादातर टेंसेस पे समय मत स्पेंड करिएगा. टेंसेस एक जनरल नॉलेज के लिए आपको चाहिए होगा, बट ज्यादा फोकस करना आप मॉडिफायर के ऊपर. ठीक है. कंपैरिजन के ऊपर, पैरेललिज्म के ऊपर, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के ऊपर. ठीक है. ये सब चीजों के ऊपर आप ध्यान दीजिएगा. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो दैट इज ग्रामर. दूसरा, फ्रेजल वर्ब्स. ठीक है. इडियम्स, इसके ऊपर आप काम करिएगा. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. एंड देन यू कैन से थर्ड वुड बी जनरल लाइक आरसी की प्रैक्टिस करना बनता है. ठीक है. एंड ऑब्वियसली द फोर्थ वन वुड बी स्पेलिंग. ओके. स्पेलिंग इज वेरी क्रिटिकल. ठीक है. आप उसके ऊपर काफी ज्यादा प्रैक्टिस करिएगा. सो विद दिस आई क्लोज दिस मॉड्यूल and we thank you very much for watching this. Do not forget to subscribe our channel, and more importantly, you can say like our video and put comments. How did you like this video? Tell us. It will be very useful to us. Thank you very much.